Assalamu alaikum everyone, this is Mubarik Khan. I hope you're enjoying good health. Respected listeners, I'm back with my friends, my students, my staff. And this is going to be a question answer session on study abroad for now. And of course, we'll try talking about IELTS as well. Be it IELTS requirement, bank statement, etc., etc., etc. And if you have any questions, you can also drop your question in the comment section. And of course, me and Ms. Shibra and any one of us would try to answer that as well. So without wasting any further time, I'll direct myself towards my birds in the house who are about to fly, inshallah. So who would like to ask the first question, and what's that? You have a question? Yes. Sir, please. This is funny fun. Actually, I want to ask something because I had already planned for study. Later, my plan has been changed Okay. because one of my uncle who living in Canada, and my one of cousin he's living in Australia. They both are told to me, Fahim, you have to apply for work visa if Okay. you really want to work here. So because actually my concern only for work, or I think everyone want to go there just for making earning. That's why nowadays. That's a sweeping statement, Yeah. though, but it's okay. All right. So, actually, yes, I want to ask, what should I do for work visa? Because I am, as I told to Sir Sausab and Miss Sadia, I want to like prepare preparation for generalize. Fine. So, what will you just mean? What should I do? Before I talk about this, I would like to know what is your background? The last degree you have done, CGPA as well as percentage or passing year, if you could highlight. Okay. After bachelor, I have done MSc from Kazan University in 2017. Okay. Nowadays, I'm preparation When for you say MSc, that means 16-year education, right? 16-year education in gender study. In gender studies, Gender okay. studies. And what was your percentage or CGPA in that? 3.5. Very good. And you mentioned the passing year is 2017. Yeah. Okay. Yeah. And after that, where you have been till now, almost Okay, 5-6 years. After that, definitely I have work experience around 6, 7 to 8 years because after my graduation, besides study and jobs. So nowadays I'm working in Khushhali Bank. Okay. Yeah, switching my bank to A regional bank of Pakistan you're working in for Yeah. now? Okay, Ji. So based upon my findings and while talking to you, one tip over here, whenever you're using a sentence, the next noun is supposed to be plural. Okay. One of my cousins, one of my cousins. uncles. Okay. Anyhow, once a teacher, always a teacher, you know. Not- So to yeah. come back here, Fahim, 2017 3.5 CGPA is acceptable still in UK for study permit as well. Okay. We need to understand the difference between study abroad, work abroad in English speaking countries, and work in Schengen zone or Gulf countries. In Gulf countries, we get a work permit, we fly and we work. In English speaking countries, there is no such rule Okay. that you get a work permit and you fly. The rule is to immigrate or migrate. So immigration basically is required. That is the toughest route to go to. Okay. Would you mind talking about your spouse, if any? Yeah. Can you just highlight what she has done so far, or would you mind taking her with you or not? Definitely. Okay. Like my plans with my son and my wife. Okay. She has done Son and a wife as BS well. in, Hmm. yeah, and she has done BS in 2019, most probably. BS in which degree? Bachelor of Nursing. Nursing. Yeah. Okay. Now you have made your job more easy, by the way. Yeah. थोड़ा सा उर्दू में बात करते हैं, थोड़ा सा कि मेरे लिए बोलना आसान, आप लोगों को समझ तो आती है लेकिन मैं बोलता ज़रा फंस जाता हूँ. The thing is, देखें जी, दो तरीके हैं. अगर आप स्टडी पे जाते हैं तो आपको 20 आवर्स वर्क अलाउड है यूके में, 1 साल की डिग्री है, 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क है, तो 3 साल के अंदर कहानी ख़त्म हो जाएगी, वापस आना पड़ जाएगा. Definitely. क्योंकि वहाँ स्टे करने के लिए कम से कम 6-7 साल रिक्वायर्ड हैं ताकि आप कोई PR वगैरह ले सकें. आपके केस के अंदर योर वाइफ इज एजुकेटेड इनफ. 2019 आपसे उनकी प्रोफाइल 2019 के मुताबिक अच्छी है. इफ शी इज लिसनिंग सो आई कॉम्प्लीमेंट टू प्लस उसके पास इंटरनेट एक्सपीरियंस भी है, वर्क एक्सपीरियंस. हर. आजकल सबसे ज़्यादा वीज़ा जो मिल रहे हैं वो केयर टेकर के मिल रहे हैं यूके में, सबसे ज़्यादा, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव.
55 से 60 लाख रुपए, आई एम नॉट डीलिंग इन वर्क वीजास, लेकिन 55 से 60 लाख रुपए तकरीबन एक्सपेंस आ जाता है, लेकिन उसके अंदर सेटलमेंट के चांसेस मैक्सिमम। स्पाउस अलाउड है, बेबी अलाउड है 1 2 3 अप टिल 6, नो प्रॉब्लम। आपको पे ऐसे होगा कि आपको भी फुल टाइम वर्क अलाउड होगा, आपकी वाइफ को भी फुल टाइम वर्क अलाउड होगा, तो ये बेस्ट रूट होगा मेरी नज़र में, अगर आप इतने पैसे अरेंज कर सकते हैं यूके में। अगर आप स्टडी पे जाते हैं तो आपकी मिसेस को फुल टाइम वर्क अलाउड होगा। अगर आप पैसे कम लगाना चाहते हैं, यानी कि 25-30 लाख में जाना चाहते हैं आज के रेट के मुताबिक 2023 में जैन में, तो फिर आपको चाहिए कि आप अपनी मिसेस का स्टडी वीज़ा अप्लाई करें और आप एज अ डिपेंडेंट जाएं। फिर आपको फुल टाइम वर्क अलाउड होगा, उनके पोस्ट स्टडी वर्क में भी आपको फुल टाइम वर्क अलाउड होगा। इवेंचुअली यू वुड अर्न, और जब आपका PSW ख़त्म हो रहा हो तो आप ट्राई करें कि आप एडमिशन ले लें, मिसेस को डिपेंडेंट कर लें, 7 साल किस तरीके से घसीट लें या दूसरी शादी कर लें। Choice is yours. वो वाइफ मुझे नहीं छोड़ेगी, वो भी पाकिस्तान में ठीक है। देखिए जी, ऐसी भी वाइफ्स हैं जो बेचारियां मजबूरन से छोड़ती हैं कि हम वापस पाकिस्तान जाके 12 रोटियां रात को ना बनाएं, तो वो कहती हैं आप दूसरी शादी कर लें, लेकिन बस आपने रहना इधर मेरे पास ही। मैंने एक दिन बात की तो कहती ठीक है, फिर उससे शादी करना जो मोर देन 60 ईयर। अच्छा माशाल्लाह, लेकिन मान रही है ना ऐसे। फिर हम 30-40 की ब्रैकेट तक उनको ला सकते हैं, आई कैन काउंसल हर, ठीक है। इससे पहले कि हम ज़्यादा पर्सनल हो जाएं, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जी प्लीज, व्हाट एल्स डू वी हैव? एनी अदर क्वेश्चंस? यू हैव अ क्वेश्चन प्लीज? I hope you got your answer, sir. Yeah, sir. Behind the scenes still, if you want to talk more, we can talk. Sure. Sir. Okay, so it's about the bank statement. Okay. Yeah. So a lot of people from my area have been asked this like several times. When you say my area, may I know which area you're talking about? KPK? Mm-hmm. So Swat and Bunair, Swabi, yeah. So fine. Guys from that area, I've been asked several times. Mm-hmm. आप सर से पूछे कि how do we make a bank statement if their father's or brother has a private business, and if there's no payslip involved and the business is not registered either, kind of like that scenario. So in that case, how are they going to provide the proof of income? I got your question, G. Anyone else who has the same question about the bank statement or proof or something? Anyone else? वैसे ही हाथ खड़ा कर लो यार. You have the same questions, right? Thank you very much. जी देखें, सबसे पहली बात है, इट्स फॉर ऑल ज़ाहिर है, इफ़ यू वांट टू मूव अब्रॉड, ईदर यू हैव टू गो फॉर ब्लॉक अकाउंट, कनाडा में, जर्मनी में, आजकल हंगरी में भी स्टार्ट हो गया है, डेब्रेसन में, तो या तो आप बाउंड अकाउंट पे जाते हैं जो कि श्योरिटी देती है कि यू आर फाइनेंशियली स्टेबल इनफ टू टेक केयर ऑफ योर रिमेनिंग फी एंड योर एकोमोडेशन। ये इसलिए चाहिए होता, पहले नहीं चाहिए होता था, बिकॉज ऑफ पीपल लाइक मी, व्हेन वी वेंट अब्रॉड वी स्टार्ट illegal work, we start infinite leave to remain over there, we even vanished and we went into dormitories etc. So उसके बाद उनको लगा कि यार ये जो पाकिस्तान के लोग हैं ना, इनको तो खास तौर पे इस रैंक में डाल, फिर एशिया के लोग, खाली पाकिस्तान के नहीं, एशिया के भी, तो इसलिए इन्होंने ये रिक्वायर किया। अब उसका तरीकाकार क्या है, यूके में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो या USA में हो, डील इसका तरीका ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं यूके की बात करता हूँ, 14,000 पाउंड आपकी फ़ी है, 4,000 पाउंड आप लोगों ने इनिशियल डिपॉजिट सबमिट करवा दिया जो कि यूके में अलाउड है, ऑस्ट्रेलिया में 50% अलाउड होता है। 4,000 पाउंड आपने अप्लाई फ़ी पे कर दी, तो रिमेनिंग जो 10,000 पाउंड्स हैं वो आपके अकाउंट में होने चाहिए, प्लस 1 साल का लिविंग एक्सपेंस जो कि UKVI होम ऑफिस कैलकुलेट करके एग्जैक्ट आपको बताता है कि लंदन में अगर जा रहे हो दैट इज एक्सपेंसिव, दैट इज 1323 पाउंड्स अ मंथ। हाउ मच? 1323। हाँ, बी इंटरेक्टिव विद मी, मैं बोर हो जाता हूँ। एंड द अदर वन इज 1023 पाउंड। अदर वन मींस आउटर लंदन, बर्मिंघम में, चेस्टर, मैनचेस्टर में, लुटन में, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। लंदन से बाहर जाएंगे 1023 पाउंड अ मंथ। अब उसका 1023 इंटू 12 कर लें, लंदन में जा रहे हैं तो 1323 इंटू 12 कर लें, वो अमाउंट आपके अकाउंट में होनी चाहिए, या आपके फादर के अकाउंट में या आपकी मदर के अकाउंट में होनी चाहिए, दैट्स इट। US अंकल को एक्सेप्ट करता है, ऑस्ट्रेलिया नहीं करता। सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट ऑस्ट्रेलिया है बैंक स्टेटमेंट्स में, ठीक है जी। यूके पे आके मैं बाकियों को फिर एक्सपेंड कर दूंगा दोबारा, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे जी। इसमें यह है कि यूके में देखें फॉर एग्जांपल आज के रेट के मुताबिक सारे पाउंड तकरीबन 58-59 लाख की स्टेटमेंट बनती है। यूके की स्टेटमेंट सबसे आसान है क्योंकि कि सिर्फ 28 डेज की रिक्वायर्ड होती है। 1 जैन से आपने स्टार्ट कर लिया तो 28 जैन तक
आपकी स्टेटमेंट मैच्योर होगी. स्टेटमेंट आपको चाहिए होती है अपने अनकंडीशनल को लेने के लिए या लेने के फ़ौरन बाद, ताकि आप कैश अप्लाई कर सकें, जिसके 50 पॉइंट्स. 10 पॉइंट्स आपकी बैंक स्टेटमेंट के हैं, 10 पॉइंट्स आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के हैं, सो दैट वी हैव 70 पॉइंट्स. यू डोंट अंडरस्टैंड उर्दू, राइट? एंड you both don't understand Urdu as well? Just a little bit. So I'm very sorry about that. Sorry, I did not consider my audience. So we'll speak in English now onwards. Gee, so that is supposed to be done. When it comes to Australia, Australia says we need a proper proof. They do not actually want the filer or the one, but they want someone who is legally earning the money. Alright. For example, you sold a land, you should have the papers so that the same amount is being transferred to your or your father's account. In case of father account, they require an affidavit that, okay, I'm sponsoring my son. Let's say an intermediate pass student who's going for ALICOS or bachelor's program in Australia, he cannot earn 60, 70, 80 lakh or 6, 7, 8 million. So of course there's supposed to be some higher up, and that is mostly father or mother. We had been providing fake statements, which is why they abducted or stopped us to give statements of uncle and aunt. They don't understand it any further. Okay? For Australia, you require history of 6 months. For UK, you require history of only 28 days. For USA, it's good to get more than a month, but still that is acceptable. 3 months is more valid. When you talk about Canada, it is SDS stream, that is student direct stream. In that, basically, you require 10,000 Canadian dollars as GIC. They call it Guaranteed Investment Certificate, just like bound account. That's supposed to be there in the bank of university you send, and that is on your own name, and you keep getting the money back monthly. Understand me? That is how it is taken. And why it is required? Just as a guarantee that you are coming here a genuine student, and you would take care of your other funds and your remaining fee by your own self. So they are not promoting. And all over the world, mostly, other than Finland. In Finland, it's 24 hours. Outer Finland, in most of the world, it is 20 hours a week allowed. Recently, Australia has changed that, and they said they had a rule of 40 hours fortnight. यानी कि 40 hours आप 15 दिनों के अंदर काम कर सकते थे. अब उन्होंने इसको after post COVID जो है इसमें उन्होंने change करके they allowed you to keep working as much as you can, which is why students are going to Australia more. So you got your answer? Yes, sir. I have another question. Thank you very much. Originates from the same question. जैसे अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिल्कुल. Sir. I've researched a bit about it. Sir, please be very much open and kill me with your questions. The question about the block account. First Okay. of all, if you could just. Which country you're talking about? I'm talking about Germany. Okay. And so, like, what is the difference between the block account and another type? I don't know what it's Bank called. statement? Yeah, the bank statement. Okay, okay. Exactly. And You know what happened in Pakistan, in mostly in India, in Asian countries, once they thought that this is one of the things which we have to fulfill, they started getting money from people, and they put that in the account as a fake or fraudulent kind of statement. Basically, statement was genuine, but they did not possess that money. So just to get the visa, the amount is gone. Whenever those accounts are being checked, those accounts are empty again. Which is why they said, do not just give us that particular lollipop that, okay, gee, this much amount we have, and once you enter, there is nothing you are bringing in the society. Of course, it's part of business. Yes. They want you to bring money, and you are all educated labor of the world. Which is why you go abroad. Which is why they ask you to come abroad. Or they are promoting their language in Germany case, Italy case, Norway case, where education is free. Yeah. And so, what is the point of like the bank statement being 6 months old? Like, what's the point of it? Thing is the same thing. For example, you put to take some amount, you had no account. For 1 month, you opened up an account, you put 7-8 million in that. Once you got visa, amount gone, and you are also gone to the other country. So they say that, okay, we need to check what is the history, how did you manage that So account. there's a natural transaction history, or That's the thing, natural as well as economical. right? Thank you so much. Pleasure having you, sir. Okay, so I hope we are clear about bank statements. Yes. I want you to ask a question. Take the mic and ask question. And the same question. If it is not properly answered, you may ask particular kind of question on the same topic.
3, 2, 1, action. When we open a block account. Okay. Which country? In Canada. Okay. So what's the reason in do not require bank statement here? Okay. I got your question. Okay, देखिए, the simple thing is, if you apply through student direct stream, then GIC is important. $10,000 credit plus 200 transfer charges. If you don't get your visa, that is refundable. Not the transfer charges, but the regular amount. Okay. And if you apply non-SDS stream, in which the success chances are next to 20% max, 20-25%. For that, the bank statement is also acceptable. They do not require 60% marks. They do not require 3 CGPA. Do not require 6.56 each IELTS. It is the requirement for really regular students, because people go to Canada to get PR. It's a common rule. Where visa is easy, where PR is the toughest. Where visa is the toughest, the PR is the easiest. Canada, visa toughest, PR the easiest. UK, visa easiest, PR is the toughest. Yeah. You understand me? Which is why they want a security that you're not coming here to get a provincial nomination program or expressway entry or Saskatchewan entry or any such entries. You are a genuine entrant. And in Australia they call it GTE, genuine temporary entrant, and they have a very particular interview for that, where they fail the student mostly. Another sir, if I apply. Now he's getting charged, you know. इस mic के अंदर कुछ है, बच्चे फिर question करना शुरू कर. Right, sir. If I apply both university, that 2 universities? Yes. Where? In Canada. Okay. Is there much only $10,000 Canadian dollar or? Yeah, one GIC would be enough, because at the same time you won't be able to read in 2 programs. It would not be the case that you're doing MBBS as well as BS English. No, sir. I understand your question. If you apply in 2, 3, 4, 5, I even only 10. apply. Let's say you apply in 10 even. I'm giving you, we call it hyperbole in English. I'm giving exaggeration of this. Even you apply in 10, one GIC would be enough. But applying in 10 or even 2, they require application processing charges, starting from $40 Canadian to $250 Canadian if you can afford. And if you fail, you even, you lose roughly around 1,500 to 1,700 Canadian dollars, which is quite much. You may give that to me if you want to waste it. By the way, what is your profile? What you have done? Last degree? Bachelor in electrical engineering technology. BSEE. Yes. And what is your CGPA? 3.62. Very nice. Just get 6.56 each IELTS. Your profile is good. When did you clear that exam? BS electrical engineering. When did you pass? In 2022. In 2022. 22. Recent year. Okay. Then that is fine. You have a good profile for that. Just get 6.56 each. Make sure that he gets 6.56 each. Inshallah. Okay. Very good. You have more questions? No, sir. Thank you very much. Thank you, sir. You have a question? Yes, sir. Yes, I miss. will ask in Urdu. No problem at all. Actually, we have 2-3 foreigners in the house, which is why I was speaking in English. You may ask in Urdu, then I'll translate. सर पहले तो ये मैंने अपनी मामा के लिए अप्लाई किया था विजिट के लिए मदर के लिए ठीक है उर्दू में मामा नहीं ना फिर ओके सर मामा तो अंकल होते हैं उर्दू मदर के लिए सर उसका मतलब इसका रिजल्ट इसलिए किया था कि उन्होंने कहा था कि कहाँ अप्लाई किया था क्या मैं क्या यूके के लिए सर यूके के लिए अप्लाई किया था और कौन से वीजा पे किया था विजिट वहाँ पे हमारा भाई है ना कब किया था सर ये रिसेंटली 2022 में 22 के कौन से मंथ में किया था सितंबर नवंबर 22 में किया ठीक है जी चलें तो उन्होंने ये ऑब्जेक्शन लगा के रिजेक्ट किया था कि इसका एक ज़्यादा अमाउंट है इसके मतलब अकाउंट में इस टाइम इसके 3-4 करोड़ पड़े थे वेरी नाइस माशाल्लाह तो कहाँ रहते हैं आप ये काम नहीं रहते हैं अच्छा ठीक तो है उसने पहला ऑब्जेक्शन ये ऑब्जेक्शन था कि इसका बहुत ज़्यादा अमाउंट है ठीक हो गया जी दूसरा ऑब्जेक्शन फिर उन्होंने ये लगाया था कि इसका जब हमने दूसरी दफ़ा अप्लाई किया था फिर आपका रीजन क्या था पहले विजिट में अप्लाई करने के लिए क्या रीजन डेवलप किया था खुद अप्लाई किया था किसी कंसल्टेंट ने अप्लाई किया मेरे भाई ने खुद वहाँ से अप्लाई किया भाई ने अप्लाई किया तो भाई ने क्या कहा था क्यों बुला रहे हैं हमको तो विजिट के लिए बुला रहा हूँ बस मतलब विजिट पे भी कोई रीजन होता है ना तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन होता है विजिट का वो ये होता है कि जी शी इज नॉट वेल
तो मैंने इनका यहाँ चेकअप करवाना है, सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन ये होता है। तो उन्होंने क्या रीजन दिया था आपको ये पता हो? सब मुझे मालूमात नहीं, लेकिन ओके वीज़ा कितनी था। ओके दूसरे में ये लगाया था ऑप्शन दूसरी दफ़ा हम्म। कि इनके अकाउंट में मनी आज जाने रहे फिक्स पड़ी हुई है। ठीक हो गया जी। मतलब जैसे ट्रेड होते हैं, हमने शो के इसके बिजनेस है वो है तो इनका नहीं, तो उन्होंने जब लगाया कि ये इनकी मनी आ नहीं जा रही, सिर्फ फिक्स पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये मतलब कितना टाइम बाद अपील किया था या री अप्लाई किया था? री अप्लाई किया था, कितने टाइम में किया था? महीने के बाद। अच्छा ठीक है। इसके बारे में मतलब हम अगर स्टडी में जाएं तो हम ये फिक्स अमाउंट देंगे या हम ज़्यादा भी रख सकते हैं? अच्छा जी, देखिए जी, एज फॉर स्टडीज कंसर्न, पहले मैं मदर पे थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। पहली बात तो ये कि अगर उनकी फाउंडेशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग की होती हमने तो रिजेक्शन के चांसेस नहीं थे। अगर कोई किसी कंसल्टेंट को टच किया होता तो वो एक अच्छा वैलिड रीज़न देता। कोई यहाँ से कुछ रिपोर्ट्स वगैरह बन जाती, फॉर एग्जांपल गॉड फॉरबिड कोई कार्डियोलॉजी का इशू है, यहाँ नहीं सॉल्व हो रहा, आई वांट हर टू बी देयर। बिसाइड्स दैट आजकल ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का सीन चल रहा है, वीडियो लीकिंग का सीन चल रहा है, इसमें जितने भी हैं ये रिजेक्शन यूके भी आए से ज़्यादा आपके अपने लोग करते हैं यहाँ से, कि इतने सारे पैसे हमारे मुल्क से बाहर जा रहे हैं, पहले ही हालात कैसे हैं, तो इसलिए भी वो नहीं, दे डोंट वांट दिस मनी टू गो आउट। एक रीज़न ये भी है, ठीक है जी। तो दूसरी बात कि जब भी आपका कहीं से रिजेक्शन हो, बीट स्टडी वीज़ा, इमिग्रेशन, किसी भी तरह का टाइप हो, तो कम से कम 6 महीने वेट करना पड़ता है, करना चाहिए, ताकि हिस्ट्री थोड़ी सी डाइजेस्ट कर ले खुद को, और जिस वजह से पहले हुआ उसी वजह को रिमूव करके बंदा अप्लाई करता है। फॉर एग्जांपल देखें कि 3-4 करोड़ आपके अकाउंट में है या मदर के अकाउंट में है, तो आपको पहले उन्होंने बता दी बात कि भाई इट्स यू आर ओवर क्वालिफाइंग फॉर द बैंक स्टेटमेंट, तो उसको कम कर लेना चाहिए, तो थोड़े मेरे अकाउंट में भेज देते, मैं संभाल के रखता हूँ। लेकिन बिसाइड्स दैट 1 महीने के बाद दोबारा नहीं करना चाहिए था। आपके केस के अंदर अगर आपका अपना अकाउंट है एंड दैट इज दिस मच बम्बार्डेड विद द अमाउंट और आपके पास उसका कोई प्रूफ नहीं है, तो ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी नेगेटिव। तो फिर आपको ये करना चाहिए कि जो स्पेसिफिक अकाउंट या अमाउंट आप जिस अकाउंट में आप जो आप कैश के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर फिर स्पेसिफिक अमाउंट डाल लें, 7-8-10 लाख ऊपर रख लें इफ़ यू हैव मोर अमाउंट। लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर बम्बार्डेड जो है वो किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लें। अकाउंट वही चेक होगा जो आप मेंशन करेंगे कैश के लिए, जिसकी स्टेटमेंट लगाएंगे और आप मेंटेनेंस सर्टिफिकेट लगाएंगे। इट्स बेटर कि आप ऐसे ही शो करें। ऊपर होने में हर्ज नहीं है, स्टडी में तो खैर बिल्कुल भी हर्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन आजकल मैं बता रहा हूँ कि ये इट्स नॉट यूके एम्बेसी, इट्स पाकिस्तानी एम्बेसी और FBI और सच पीपल, दे डोंट वांट द मनी टू गो आउट। वो तो चाह रहे हैं कि डॉलर यहाँ आए ना, विच इज़ वाई इट गॉट रिजेक्टेड। सर दूसरा क्वेश्चन मेरा कनाडा, आपका पहला क्वेश्चन को थोड़ा क्लियर हुआ? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन तो नहीं Yes, है? sir. ओके जी, दूसरा क्वेश्चन मेरा कनाडा क्लियर है। मैंने मास्टर डिग्री की है। ठीक है। मास्टर्स किस में किया आपने? इकोनॉमिक्स में। MS है? MSc 16 MSc 16 ईयर एजुकेशन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। BS इंजीनियरिंग के लिए उसमें GPA कम है सर, तो इसलिए उस पर मुझे पता है वो नहीं करेंगे। MS इकोनॉमिक्स आपने किया इन विच ईयर? 2022 में 2022। एंड व्हाट इज योर CGPA इन दिस? 3.5। ठीक हो गया। एंड बिफोर दैट? BS मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वो 2018 में की। BS मैकेनिकल इंजीनियरिंग Yes, sir. in 2018. And what was your CGPA in that? 2.4। सॉरी ज़रा मैं पब्लिकली थोड़ा कोर्ट मार्शल कर रहा हूँ आपका, लेकिन पार्ट ऑफ इट आप क्वेश्चन सर ये करें। बच्चे थे वो बाहर से आते थे। इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। बाहर से आते थे, अंदर से होते थे, वो एक अलग कहानी है, विल टॉक अबाउट इट लेटर। अच्छा, ये BS आपने किया 2018 में, राइट? Yes, sir. एंड MSc in 2022. एंड बिफोर दैट? BS से पहले भी कुछ हुआ होगा? इंटर। इंजीनियरिंग व्हेन? 2014 में। पक्की बात? Yes, sir. ठीक है। एंड मैट्रिक? 2012 में। फाइन। देखिए जी, आपके केस के अंदर देयर आर 2 विंडोज, वन विच प्रमोट्स यू एज एन इंजीनियर, वन प्रमोट्स यू एज एन इकोनॉमिस्ट, which both of them are poles apart. ठीक है, you don't have a foundation of something at which you have made a building, and the foundation you have that is weak. Yes, sir. समझ रहे मेरे पॉइंट को? If we apply through BS mechanical engineering, that is 2018 5-6 year study gap as well as 2.4 CGPA, which is not acceptable in Canada for now. And if I apply for MSc economics 3.5 CGPA, so how would I tell them that he has done 2 years MSc without doing any BSc, and he has done a BS in mechanical engineering, and now he has done economics, MSc in economics? How would you prove it? सर उस इकोनॉमिक्स के लिए हम मेरे पास उंगलियां उठाना दोबारा मेरी तरफ। हाँ, सॉरी सर। कोई बात
इकोनॉमिक्स के लिए मेरे पास ये रीज़न है कि मैंने बीए इकोनॉमिक्स भी किया हुआ है। ओके, वेरी नाइस। कब किया ये बोलो ना बेटे। वो 2017 था कि वही 2017 था। बीए इकोनॉमिक्स। बीए इकोनॉमिक्स अच्छा जी। पाकिस्तान। No. तो सर Here comes a के twist. बाद 2018 के बाद मैंने बीए इकोनॉमिक्स कब किया था? 2017 में सर 17 में। और 17 से 18 में क्या हुआ? बल्कि 17 से 20 तक क्या हुआ? इसमें मैंने काम किया सर। क्या काम? फैक्ट्री में एज इंजीनियर। 18 से मतलब 18 में शाह साहब माइंड मत कीजिएगा, अब आप इकोनॉमिक्स करके अब आप एज एन इंजीनियर जॉब करते रहे। आप ऐसे नहीं करें यार, ये माइंड कर। तो मैंने फैक्ट्री में ठीक है, इंटर्नी के साथ मुझे वहाँ पे जॉब मिल गई एज एन इंजीनियर। एसोसिएट हुआ पहले, ठीक है, आपने वो किया, ठीक हो गया। बीए जो था वो मैंने प्राइवेट किया था, ऐसे मतलब ठीक हो गया। एक दोस्त की खातिर मतलब उसके साथ जाना ठीक है जान तो फिर मैंने 3 साल काम इंजीनियर काम किया। तो फिर आप हमारी बात माइंड तो नहीं करें, हम तो लाइटर नोट पे आप थोड़ा सा मजाक करेंगे। ऑफ कोर्स। तो मैंने काम किया, वर्क किया वहाँ पे। ठीक है। For how long? 2022 तक। 2020 ठीक है। till 2022 and Yes, at the मतलब same मैं- time you were doing हाँ, MSc in 2021 में मैंने एडमिशन MSc इकोनॉमिक्स में ले लिया। ठीक है, तब मैंने मुझे यहाँ पे जरा रोकने दें, मैं थोड़ा एडजस्ट करूँ इस चीज़ को। आपने बीए इकोनॉमिक्स किया, 2017 एज एन इंजीनियर आप जॉब करते रहे 2022 तक। 21 तक एंड तक सितंबर So में much छोड़ right. दिया। Okay. ठीक है, तो मैंने जाके MSc इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया। Fine. ठीक है, वहाँ के में सब चलता है। ठीक है ना, आप खुद केपीके को खराब करे हो ना, फिर उसी लिए तो मैं वीडियो नहीं भी मिल में रहा। सब बताना नहीं चाहता इसलिए। लेकिन इट्स ओके, वीडियो खत्म हो गया। तो मैं अगर सर ये कहूँ कि मैं इंजीनियरिंग को अपनी प्रोफाइल से हटा दूँ, ठीक है जी, इंजीनियर हटा दिया हमने। मैं इकोनॉमिक्स पे अप्लाई करूँ कनाडा के लिए। ठीक है जी। लेकिन वहाँ पे मैंने कुछ और लोगों से बात की, उन्होंने कहा आपके पास ऑलरेडी मास्टर की डिग्री है, आप स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नो दैट्स नॉट ट्रू। जो आप मास्टर्स उनको बोल रहे हो वो उनका मास्टर्स नहीं है, वो उनका बैचलर्स है। योर एमएससी 16 एजुकेशन, जो कि वर्ल्ड 16 साल की एजुकेशन को बैचलर्स कंसीडर करते हैं, और बाद में उनका 2 इयर्स का मास्टर्स, यूके में 1 ईयर का मास्टर्स। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल ये आपके 4 साल अनडू कर देता हूँ आपकी प्रोफाइल से, ठीक हो गया जी। कुर्सी आजकल आवाज़ें देती हैं, इसका मतलब है वजन बढ़ रहा है। 2014 में आपने किया इंटरमीडिएट एफएससी, यस सर, उसकी परसेंटेज क्या है? 72 अच्छा ठीक है, good। फिर आपने 2017 के अंदर किया बीए। यस सर। अब ये बताएं कि बीए एक ही साल में हो गया था? 2 साल में सर। अलग अलग उसकी है आपके पास स्क्रिप्ट्स, ठीक हो गया जी। अब 14 से 15 का, यानी कि आपका 14 से 15 का जनरल गैप आ गया, तकरीबन 1.5 साल का। पहले में ये प्रूव करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट के ऊपर एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता, एफएससी सर्टिफिकेट है, डिग्री नहीं। तो आप लोग जो सुन रहे हैं, तो मुझे नहीं पता, अगर आप लोग बोर हो रहे हैं तो आप स्टॉप कर लें, खाना शाना खा लें, फिर वापस आए, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं आपसे। तो आगे चलें, बंद नहीं करना, मैं उनको ब्रेक दे रहा था। 17 के बाद बच्चे आपने कहा कि आपने 22 के अंदर किया एमएससी, यस सर। यानी कि अब हो गया 16 एजुकेशन। अब यहाँ पे आ गया गैप 17 से लेकर 2020 तक एटलीस्ट, यानी कि आपकी प्रोफाइल हो गई थोड़ी गैप वाली। आखिरी सीजीपी अच्छा है, इसकी बेस पर एमएससी इकोनॉमिक्स की बेस पर आप आगे मास्टर्स कर सकते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। लेकिन ये जो गैप है ना आपका, ये बड़ा क्रूशल होगा। वर्ल्ड अंडरस्टैंड्स 10 + 2 + 4 मैट्रिक, इंटर, बैचलर्स। इसीलिए पाकिस्तान से ये चीज़ें ख़त्म हो गई, अब एसोसिएट डिग्रीज आ गई, ब्रिजिंग आ गई, और बीए शीए ख़त्म हो गई। ठीक, आपका है 10 + 2 + 2 + 2, which is a little difficult for them to digest. टेक्निकली आपका जो बैचलर्स कंप्लीट होना चाहिए था, वो होना चाहिए था 16 के अंदर, सॉरी 18 के अंदर, आफ्टर योर इंटरमीडिएट 18 तक आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए थी क्लियर। बीच में हमने बीएससी हमने उड़ा दिया, ठीक है, बीएस उड़ा दिया। अब यहाँ पर आ गया एटलीस्ट 5 इयर्स का गैप, आप उसको ऊपर से पकड़ लो या दरमियान से पकड़ लो, 4-5 साल का गैप। अगर हम अप्लाई करते हैं एसडीएस स्ट्रीम के थ्रू, तो वो कहते हैं 2 इयर्स ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, या तो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक, ऑनलाइन वेरीफाइबल विद सैलरी स्लिप्स एंड प्रॉपर ऑफर एंड प्रॉपर एक्सपीरियंस, फिर हम उसे काउंट कर सकते हैं। मसला ये है कनाडा के अंदर कि आजकल एसडीएस में इंटरव्यूज नहीं होते,
तो हम ये जो कहानी आप मुझे सुना रहे हैं ये हम उसको नहीं सुना सकते, और वो जब कहानी सुन लेगा तो वो कहेगा ही इज नॉट अ जेन्युइन स्टूडेंट, ही इज जस्ट गोइंग देयर टू गेट अ पीआर। सबसे बड़ा मसला ही, तो वहाँ पे रिजेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं। दोज ऑफ यू लिसनिंग एज वेल, इफ यू हैव प्रोफाइल्स व्हिच आर वीक एंड अनपेड प्रमोशन ऑफ कोर्स, Gateway Study Links helps you going abroad, as well as if you want to go to UK as well as Canada like him, we will charge for one country and we can help you going to both. मेरा काम तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं और नुकसान 3-4 लाख रुपए का होगा। ठीक है सर। अब इमिग्रेशन की सर मैंने पता की, ठीक है। उन्होंने कहा आप इस इमिग्रेशन में आपके पॉइंट्स पूरे हैं, सिर्फ आपको IELTS में 777 चाहिए। एक्सप्रेस एंट्री की बात कर रहे हैं आप? 8777 एक ही बात। लिसनिंग मेट चाहिए, बाकी सब में आपको 7 ठीक हो। उस पे अगर आप ये कर लेते हैं, IELTS क्लियर कर लेते हैं, तो आपकी एंट्री हो सकती है 100%। ओके। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं? मैरिड हूं सर। और कोई हैं आपके डिपेंडेंट्स? यस सर। मिसेस के अलावा? डॉटर है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड वाइफ इज आल्सो एजुकेटेड? What she has done? BA सिंपल। BA? यस सर। BA नहीं ना, बैचलर्स कंसीडर हो रहा ना। 14 साल को कुछ समझ नहीं आती इन लोगों को, ये तो प्रॉब्लम है ना। इनके पॉइंट्स वीक होंगे अगर ये डिपेंडेंट होकर जाती हैं। अगर ये भी 6.5 का IELTS लाती हैं और आप 7.5 777 लाते हो तो फाइल पूल में डाली जा सकती है। पूल कुआं भी होता है, पड़ी रहती है, कभी कभी उठ भी जाती है। अगर मैं इंडिपेंडेंट हूं, मतलब मैं फैमिली को नॉलेज दूं, खुद को पहले तुमने BS छोड़ दी, अब तुमने बीवी बच्चे छोड़ दिए। सब वो टेंशन नहीं है। क्या? मैं कह रहा कि जाऊं। अच्छा अच्छा, वेरी नाइस, माशाल्लाह काफ़ी खुश लगती हैं भाभी आपसे। हालात ऐसे हैं पाकिस्तान। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक जी। दैट कैन बी डन। देखें जी, एक होता है अप्लाई करना और दुआ करना, एक होता है अप्लाई करके दुआ करना और अंदर से यकीन भी होना कि मुझे पता हो जाएगा लेकिन आप नहीं करना। ये इसमें अप्लाई करना और दुआ करना है, अल्लाह ने किया हो गया, अदरवाइज प्रोफाइल्स डैंगलिंग है मेरे मुताबिक। आपकी लैंग्वेज असेस करते हुए 8777 भी एक कहानी हो जानी है, क्योंकि आपकी सारी क्वेश्चनिंग उर्दू में हो रही है, तो ये शो करता है हम कितने स्ट्रॉन्ग है लैंग्वेज। वो सर समझने की, आपकी बात नहीं समझ सकते। लेकिन समझनी खाली नहीं है ना, समझानी भी तो है। तो बच्चे देखें, आप एक तरीका करें, पहले एक पाथ चूज करें। अगर इफ समवन इज सेइंग दैट ओके 100% वी कैन हेल्प यू गोइंग टू कनाडा ऑन इमिग्रेशन, इससे अच्छा कुछ नहीं, क्योंकि आप पढ़ना चाहते भी नहीं हैं, आप सेट होना चाहते हैं, जो मुझे भी समझ आती है, किसी भी एम्बेसडर को, वीज़ा ऑफिसर को समझ आती है, इसीलिए केस वीक होता है आपका। ठीक है जी। अगर आप उस ट्रैक पे जाते हैं, इट रिक्वायर्स जनरल ट्रेनिंग IELTS, द अदर वन रिक्वायर एकेडमिक IELTS, तो ये दोनों सेपरेट पास। जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे, then you were going to UK, remember? Now you went to Canada, then you went to Canada again on different portions. तो ज़्यादा आप उस तरफ अगर इंक्लिनेशन रखते हैं तो you can move to general training IELTS as well. ट्राई करना चाहते हैं, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। एकेडमिक और जनरल के अंदर टास्क 1 का डिफरेंस है राइटिंग का, और रीडिंग थोड़ी ईजी है लेकिन स्केलिंग मुश्किल है, तो मोर और लेस इट्स सेम। ठीक है जी। ये तो बड़ा पेपर गंदा हो गया मेरा भाई, इधर तो बड़ा कुछ हो रहा है, बहुत सर, शुक्र मैंने है। आपकी वही बात नोट करके, मतलब मैं पहले यूके चला जाऊं, आप कुछ Sir, we are thinking that देखें जी, फ्रॉम लेवल 0, और माइक करीब रखना है, ऑडियंस को आवाज आनी चाहिए। फ्रॉम 0 to 10 इट्स अ वेरी बिग जंप, फ्रॉम 5 to 10 इट्स अ लिटिल जंप। आप जब यूके ग्रेजुएट हो जाएंगे तो देन यू हैव मोर प्रोफाइल, मोर मार्क्स, लेकिन आपकी एज भी बढ़ जाएगी उससे। ठीक है जी। तो देन शिफ्टिंग वुड बी इजी। देखें, हर कंट्री की इमिग्रेशन की पॉलिसीज होती हैं, कभी वो फ्लेक्सिबल होती हैं, रिलैक्स होती हैं, कभी वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। सबसे रिलैक्स आजकल यूके की हैं। और ऑफ द रिकॉर्ड सुनने में आ रहा है कि ब्रेक्सिट हुआ था पीछे, ब्रिटिश एग्जिट हो गया था, यूरोप से बाहर निकल गया था, भी ये सुनने में आ रहा है कि शायद ये रीयूनाइट हो जाए, और अगर ये रीयूनाइट हो जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा पर्क्स बढ़ जाएंगे यूके के। फिर शेंजन एंट्री हो जाएगी एक तरह की, कि जर्मनी में जाओ या माल्टा में जाओ, कहानी एक ही है। सर मैं ये मेरा क्वेश्चन है कि मैं तो यूके चला जाऊं, ओके, ठीक है, 27 मेरी एज है, ठीक है तो वहाँ से मैं कनाडा मूव कर सकता हूं? जी, कर सकते हैं। आप 1 साल का मास्टर्स करेंगे, 28 ईयर्स आपकी एज हो जाएगी। 30 ईयर्स तक तो एज के मैक्सिमम पॉइंट्स हैं, फिर 31 के बाद 5 गिर जाएंगे, 32 5 और गिर जाएंगे, तुम 1 पढ़ोगे वो 5 गिरेंगे। Clap for him, very good. All right, ji, thank you very much for your time. Anyone else who has a question? I guess you have a question. You should ask a question. Ji, Sir, I have a question about bank statement. glad to hear. Like same, my brother account, he has
transaction like 23 to 24 crore. Very nice, So mashallah. then what will I do? Like in my account. First of all, your brother's account is not permissible or acceptable for your studies. Yes, sir. So it goes Yes, sir. poles apart. This is my question. Then what should I do? Does he have an account in which he has some stagnant money or some stacking, or he keeps? He keeps, sir. Okay. And what's the lowest he could maintain? I think Junaid, he knows all of it. 40 Wow. 40 to 50 lakh. Yes, sir. Then just ask him to trust you and transfer the amount in your account and fly with the amount. Okay, actually, if you would do it in this way, you would weaken up your case yourself already. Brothers, Yes. sisters, they don't understand. Mother, father, they understand only. Okay? Sir, we are thinking, both we are thinking that first we go to like UK. Mashallah. And then we just complete our study and then we don't care about like money wise. Of course. And we don't want to work for 2 years after 2 Very years. nice. And then can I go also to Canada? Very nice. If anyone from UKVI Home Office is watching our channel right now, these two, they are not genuine students. They just want to move to UK and then they would like to vanish to be zoomed to both of them. They गौर से पहचान लें इन चेहरों को, ये लोग ये करना चाह रहे हैं. You can certainly, no one can stop you. और इसमें कोई ऐसी सच वाली So बात like anyone told that Canada has point based system. True. So from where you want to go, the criteria is same. लेकिन जी आप वेस्ट से या ऐसे किसी से जब आप इक्विवेलेंस लेते हैं जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जो फॉरेन डिग्री होती है उसके इक्विवेलेंस का पॉइंट ज़्यादा मिलते हैं आपको. You have a question? Good, sir. Do you understand me? तो वहाँ से आपके पॉइंट्स बढ़ जाएंगे in short. ओके सर. Okay, thanks. सर ये बैंक स्टेटमेंट है, अगर हम 1 महीना मतलब मैं केस अप्लाई कर रहा हूँ, 1 महीना पहले मैं न्यू अकाउंट ओपन कर लेता हूँ. Doesn't matter in UK. ओके सर, फिर ठीक है. For more questions, 0331873123 Okay. सर we have. Okay. Walaikum assalam. Sir, I just want to ask a question about a study gap. Okay. How much study gap do you possess? Sir, I have done my intermediate in 2019. Very nice. May I know your percentage in that? Sir, 55%. Okay. ठीक है. Typical लड़कों वाली percentage है. It's okay. Move And on. after that, I have done 1 year diploma in health and safety. Doesn't matter. That's IOSH and Bosch or something or what? No, after 1 year diploma, I have done the Bosch. Okay. Doesn't matter as well. And It matters in Middle East only. And after Okay. that, I am just doing real estate business. Very nice. So formal studies are till 2019. Yes, sir. In short. एक तो कहानी आपने अपने आप को सुनाई हुई है ना, फिर मैं साल की कर रहा था, फिर मैं वो कर रहा था. Yes, sir. वो एक अलग चीज़ है. Let it be. अब फॉर एग्जाम्पल कहे कि एक बंदा मैंने 1 साल के लिए IELTS प्रिपेयर किया है. So what? ये इसका कोई कनेक्शन नहीं है. Okay, sir. आज मैं थोड़ा सा सीधा सीधा हूँ तो आपने माइंड नहीं करना. No, sir, no. 2019 55% कहाँ जाना चाहते हैं? Sir, I am planning to Australia. Not possible. And after that, second option is UK. Possible. जहाँ पे इंटरव्यू होगा वहाँ आप फंसेंगे. Okay. क्योंकि यूके का क्या है, कैश लो 50 पॉइंट्स, 10 पॉइंट स्टेटमेंट के लो, 10 पॉइंट्स लैंग्वेज के लो, हर कंसल्टेंट यूके पे बात करता नजर आएगा. रीजन क्या है? 1 2 3 गो. देयर इज नथिंग इन दैट नाउअडेज. सो इट वुड बी पॉसिबल ओवर देयर. फाउंडेशन प्रोग्राम में हो जाएगा आपका यूके में. एलिकॉस में ट्राई हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में विद 30% चांसेस. अगर 6.5 आइल्स में लेते हैं या 60+ पीटीई में लेते हैं तो चांस हो सकता है. लेकिन आप डिप्लोमा में अगर अप्लाई कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो ऑस्ट्रेलिया के डिप्लोमाज आपको बाद में टीआर में या पीआर में पॉइंट्स नहीं देते तो बच्चे और भी ख्वार होते हैं. Okay. तो इसलिए डिग्री प्रोग्राम के अंदर की रिक्वायरमेंट कम है. So, sir, there is any procedure to overcome that study gap? प्रोसीजर्स तो बहुत सारे हैं लेकिन आपकी एजुकेशन नहीं बढ़ाई जा सकती. या तो फिर AIOU टाइप किसी से एक BA डाल दो बीच में. लेकिन 14 ईयर से ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल ही समझ नहीं आती. 12 ईयर फिर समझ आती है. ठीक है जी, वो फिर भी यूके ही बच जाएगा आखिर में आजकल के मुताबिक. तो कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसको आप फिल कर सकते हो जैसे आपने 1-2 डिप्लोमे किए, एक DIT डाल दें, एक वहाँ से पकड़ के कुछ और डाल दें. गैप फिलिंग कर लेंगे बट दैट वुड नॉट बी अ जेन्युइन गैप फिलिंग. Okay. दैट वुड बी अ जस्ट फिलिंग. Okay. ठीक है? You got your point? Oh, thank you, sir. No problem. You have a question? Yes, sir. You should have a question.
Ask your question. Hurry up before the time vanishes. Ask question, please. So actually, I haven't any plans now Very because good. I'm undergraduate, and after graduation, I will be. Okay, no problem. So once we would be having our IELTS round, and in that you can ask questions. Okay, sir. I would like to listen to your plans. What are your plans? Sir, I have a question. What is the underpass way taking to going Australia? You mean to say pathway, not underpath? Underpass way. नहीं underpass तो वो comedy joke वाला. The same like that. Okay, pathway basically. Yeah. May I know your profile if you don't mind? Your name first Sir, of all? Ahmed. Ahmed. Yes, Ahmed. What you have done so far? Sir, A-levels. Yes, Ahmed. A levels, and you mentioned your grades behind the scene already, so let's not highlight them. And what do you want? Australia? Yeah. So for A levels, why not? You can do that. When did you complete your A levels? 2022 November. Yeah, Just get 6.56 each in IELTS. You have high options available in Australia. Yes. Sir, basically, you don't understand the question, sir. Yeah. There are two ways, Mhm. sir. Firstly, diploma, and sir, the second one is second year. I think the first year of university. Yeah. Sir, what is the difference? Actually, I have answered it already. If you would go in diploma, for example, you go to Sydney, Melbourne, Perth, or Wollongong, anywhere, and you go in diploma, diploma does not add into your PR points later, Okay. which is why diploma is discouraged to go into. Okay. As far as the pathway program you're talking about, pathway is part of ALICOS. That is part of a short thing which leads to a big thing. For example, ALICOS 8 months studies of language and basic maths, and then you get a regular degree. Okay. That's another pathway. Okay. The one you're talking about, you're talking about pathway to BR. Yes. Sir. I understand your question, but that particular diploma would not help you in that. So degree program is supposed to be chosen. देखिए ये hierarchy है in Australia. Private universities, government university, private college, community college. Maximum chances उससे कम, सबसे कम. तो आप डिप्लोमा प्रोग्राम्स यहाँ के चूज करेंगे तो फिर मेरे पास ही बैठे हुए होंगे. So, sir, in Australia, जी, बेटा, one year diploma, the जी. next year in the university. इसी को एली कॉस्ट कहते हैं जब आपको बता रहा हूँ. Sir, वो 3 तो- years, हाँ. 3 years graduation, sir. No, देखिए जी 3 year graduation is in UK, not in Australia. In Australia we have 4 years graduation. आपने A levels किया है, which is 13 year education, I understand. आपका ALICOS exempt होगा और आप directly graduation program में जाएंगे. Because ये जो सिलसिला है, this all episode belongs to Cambridge UK. Yeah. So they are more happy in that to promote you on level 2 sometimes. Okay. Tier 4 visa, what do? They take your first year, they encompass that quite often. Which is why, you know, O levels 11 year education, A level 13 year education, and in UK when you go there is 3 year bachelor's which is 16 year education, so that you get your graduation. Okay. ठीक है? तो UK को ये बात समझ आती है, ऑस्ट्रेलिया को ये बात नहीं समझ आती. So why he mentioned in the page of the universities, Curtin University, like Deccan University, he mentioned that 3 years bachelor in BS accounting and BS business. उसके अंदर 2 कैटेगरीज हैं. एक कैटेगरी ये है जो कि नेशनल स्टूडेंट्स की है, एक कैटेगरी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की है, एंड यू आर वन ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स व्हिच डज नॉट बिलोंग टू यू. So no, in our section. टेबल पे आ जाओ, फिर लड़ाई कर लेते हैं थोड़ी देर. देखिए जी, मैंने जैसे आपको मेंशन किया, कुछ यूनिवर्सिटीज से आपने कर्टन मेंशन की, एसेक्स है या ऐसी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, वो ऐसी भी हैं जो यूके में भी हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, इनफैक्ट वो मलेशिया में भी हैं. तो सिस्टम यूके का चल रहा है, तो यूके को ये बात समझ आती है, उसके कैंपस को ये बात समझ आती है. फॉर एग्जांपल TMUC पाकिस्तान में है, हार्टफोर्डशायर के साथ, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के साथ उनकी एसोसिएशंस हैं, तो वही वाले प्रोग्राम जो यूके में एक्सेप्टेबल हैं वो पाकिस्तान में भी एक्सेप्टेबल हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर MOU और एसोसिएशन और देयर ब्रांच और देयर कैंपस. कहानी तो यूके की ही चल रही है ना. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. So basically the point is that 4 years degree in Australia you can get. हाँ, तो मैं तो यही कह रहा हूँ ना बेटे. Sir, नहीं जी नहीं, ऐसे नहीं होगा. नॉट सेटिस्फाइड तो किसी नहीं कोई. अभी हम खेलेंगे, पकड़ लें, दोबारा पकड़ें. आ जाओ. आप देखें, कुछ बातें आप बोल रहे हैं, कुछ बातें आप खुद से फील करें. जरा ऊंचा बोले, मुझे भी समझ आए आप क्या कहना चाह रहे हैं. so basically अभी कहाँ पे कंफ्यूजन का है? Sir, the question is that the Australian you can get Australia degree if you want to go after A level. Yeah. So how much duration?
in bachelor degree. Standard duration is 4 Standard, years. 4 years. You are talking about the exceptionals, which are based upon UK based degrees. Yes, sir. ठीक है जी, वो पॉसिबल ज़रूर है, लेकिन वो यूके का प्लान है, दैट इज़ नॉट डायरेक्ट प्लान ऑफ ऑस्ट्रेलिया. हर कंट्री की अपनी प्लानिंग है ना. पाकिस्तान में किसी को देखा आपने कि 3 साल में बैचलर्स कर लिया उसमें, अनलाइक बीए जो कि बैचलर्स नहीं होता. हर यूनिवर्सिटी बीएस करवा रही है इंग्लिश में, मैथ्स में, जिसमें भी 4 इयर्स एजुकेशन. तो उनकी कैटेगरी है. वहाँ की जो बोर्ड है, जैसे पाकिस्तान में HEC है, ये 3 साल के बैचलर्स को फिर नहीं अटेस्ट करके देंगे आपको, जो पाकिस्तान से हुआ होगा. इसलिए फिर आपको IPCSS की इक्विवेलेंस चाहिए होगी. तो भाई 4 साल का जनरली है, एक्सेप्शन की सूरत में हो सकता है. Thank you. Anyone else who has any questions? See, you have any question? No, sir. मैंने सही कहा था ना वीडियो से पहले तुम्हें. All right then, thank you very much for your time, and I believe we are done with the basics. Still, if you have any questions, and if you have any questions, you're more than most welcome to visit our Anique branch, as well as you can drop your comments in the comment sections. Thank you very much for your time, and it's really a pleasure having you in the house. We'll have a tea break, and then we will go for IELTS round 1. Okay. Stay tuned. Bye bye.